Hi everyone, you are with me AS Law Notes. Today we will discuss about maintenance of wife, children and parents. पहले ये प्रोविज़न सेक्शन 125 से 128 के CRPC में दिए गए थे, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा साहित्य के सेक्शन 144 से 147 में दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस जनरल मीनिंग में हम कहें तो टेक केयर ऑफ समवन। मेंटेनेंस मीन्स गिविंग नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन फॉर सर्वाइवल. It includes shelter, food, clothing and every aspect of human life which is essential for survival and existence. Maintenance is amount money alimony given to a person does not have sufficient means to survival or is unable to maintain by the person who is responsible and neglect to maintain him or her. मेंटेनेंस मीन्स होता है कि अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी के लिए और मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं कर रही हूँ और सामने वाला अनेबल है अपनी मेंटेन करने के लिए, तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि उस व्यक्ति के लिए हमें मनी देनी होगी जिससे वो अपना पालन पोषण कर सके। वैसे तो हर पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस का प्रोविज़न दिया गया है, जैसे सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 23 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट, सेक्शन 36 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। लेकिन इससे अलग मेंटेनेंस का प्रोविज़न सेक्शन 144 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा साहित्य में भी दिया गया है। टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो प्रोविज़न ऑफ मेंटेनेंस अंडर BNSS। आइए, सेक्शन 144 ऑफ BNSS deal with order for maintenance of wives, children and parents. In legal term, maintenance means money that someone must be regularly to a former wife, husband or parents, especially when they have had children together. It is a duty of every person to maintain his wife, children and aged parents who are not able to live on their own. आइए जानते हैं स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है। सेक्शन 144 is secular in nature. It does not apply to any particular religion or sect but to all individuals, irrespective of their reason. सेक्शन 144 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा साहित्य सभी इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल है, irrespective of their caste, religion, sect, etc. और इस प्रोविज़न को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्रिवेंट कर सकें होमलेसनेस पर्सन को बाय वे ऑफ प्रोसीड्यूर टू प्रोवाइड स्पीडी रेमेडी टू दोज हु आर इन पेन। नाउ मूव टू ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का ऑर्डर कौन देता है? A magistrate first class may pass an order for maintenance to a person to given monthly allowances to his wife or child or parents. Amount is not fixed. It may be any sum considering family status and condition. Order for maintenance is given when person refuses to maintain his dependent like wife, children or parents. Who can claim and get maintenance? Wife, minor child, major child, parents can claim and get maintenance. चलिए पढ़ते हैं वाइफ से। वाइफ, a wife can claim maintenance from her husband
if she does not have sufficient means to survival or who is unable to maintain herself. The word wife include a divorced wife जिसने अभी तक रीमैरिड नहीं की हो आफ्टर डिवोर्स, and also include wives of voidable marriage can claim maintenance. voidable marriage क्या होती है? voidable marriage वो होती है जो इनिशियली वैलिड होती है लेकिन एक पार्टी के कंस्टेंट करने पर कोर्ट के द्वारा वह इनवैलिड की जाती है। जिस टाइम पर मैरिज की हो उस टाइम पर या तो वो अंडर एज हो या मेंटली डिस्टर्ब हो या फोर्सफुली या फ्रॉडफुली किसी ने मैरिज करवाई हो, इस केस में वैलिड वॉइडेबल मैरिज होती है। दिस मीन्स दैट मैरिज इज कंसाइडर्ड वैलिड until it is declared invalid. If the wife is earning and earns sufficiently, then she cannot claim maintenance. अगर वाइफ अपने आप सफिशेंट है अपने आप को मेंटेन करने के लिए तो वह मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। वाइफ कैन नॉट claim maintenance in 3 conditions. If she is living in adultery, if without sufficient reason she refused to live with her husband, and last, they are living separately by mutual consent. If a relationship is in the nature of marriage and essential circumstances of marriage are fulfilled, means that living relationship में भी वाइफ या वुमेन क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। बट वाइफ ऑफ अ वॉइड मैरिज कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, देयरफॉर वाइफ ऑफ सेकेंड मैरिज इज नॉट इंटाइटल टू क्लेम even if she is unaware of the fact of first marriage. It means that only woman who is legally wedded wife is entitled to get maintenance under section 125 of CRPC, but now it is 144 of BNSS. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सविताबेन सोमाभाई पाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 के केस में कहा था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्या वाइफ अनएम्प्लॉयड हस्बैंड से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? तो आंसर है यस, क्योंकि मोस्टली केसों में यह देखा गया है कि हस्बैंड इंटेंशनली अपनी जॉब छोड़ देते हैं ताकि उन्हें मेंटेनेंस ना देना पड़े। बट राइट ऑफ वाइफ टू गेट मेंटेनेंस इज एब्सोल्यूट राइट इवन इफ हस्बैंड इज जॉबलेस। Section 144 says that if husband has sufficient mean, he has to maintain his wife. The word sufficient mean interpreted widely. It means not confined to visible means only. If a person is healthy and able, he is to do a work and support his wife, children and parents. अगर हस्बैंड हेल्थ में सही है तो उसकी यह ड्यूटी बनती है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे जो कि अनेबल है टू मेंटेन हर सेल्फ। यह दिस इज से डैट सीमा सालकन वर्सेस समर सिंह सालकन 2019 के केस में कहा गया था। आइए अब हम रिलेटेड केस पढ़ते हैं। फर्स्ट, संजू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन दिस केस हेल्ड even a judicial separated wife is entitled to maintenance. Next, Kalyan De Chaudhary versus Ritu De 2017. In this case, Supreme Court held that quantum of maintenance is not prefixed but shall be decided as per the situation of the parties. It shall always be decided upon the basis of fact, circumstances. It can never be too exclusive nor too restricted. The order for maintenance must always be justifiable for both the parties. The next case is Selja versus Khobana 2018. In this case, a wife capable of earning and a wife actually earning are two different things. ये बताया गया था. They cannot be put under the same frame.
The earning of women must be voluntary earning, not by forcefully. If survival of a wife is on begging or doing material work, it does not mean that she is capable of maintaining herself. वाइफ ऐसी जॉब करती होनी चाहिए जो सेटिस्फाई करे नीड ऑफ वाइफ फॉर सस्टेन, बट court also need to scrutiny of such circumstances where her wife deliberately stop working or leave work order to seek maintenance. In this case, wife cannot claim maintenance. Now we will move to discuss maintenance to minor child. Minor child कौन होते हैं? जो पर्सन 18 ईयर से एज उनकी कम होती है वो माइनर चाइल्ड कहलाता है. अ पर्सन इज लाइबल टू मेंटेन हिज माइनर चाइल्ड वेदर लिगिटिमेट और इलिगिटिमेट. अब हम जानते हैं लिगिटिमेट और इलिगिटिमेट चाइल्ड कौन होते हैं. जो वैलिड मैरिज से बच्चे पैदा होते हैं वो लिगिटिमेट चाइल्ड होते हैं और जो इनवैलिड मैरिज से बच्चे पैदा होते हैं वो इलिगिटिमेट चाइल्ड होते हैं. नाउ वी विल मूव टू डिस्कस माइनर डॉटर. If minor daughter is unmarried, then she is entitled to get maintenance from her husband. And if she is married, then she is also entitled to get maintenance from his father, but magistrate has to be satisfied that her husband is also minor and does not have sufficient means to maintain of his minor wife. इस केस में मैरिड डॉटर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने फादर से. नाउ वी विल मूव टू डिस्कस मेंटेनेंस टू मेजर चाइल्ड. अब मेजर चाइल्ड के केस में मेंटेनेंस कब क्लेम कर सकते हैं? अ पर्सन इज लाइबल टू मेंटेन हिज मेजर डॉटर नॉट बीइंग मैरिड. आफ्टर मैरिज husband is guardian of his wife, but till marry, father take care of a major girl. Now in the case of major son, only when he is mentally or physically abnormal or in such a condition he is unable to maintain himself, इस केस में मेजर सन को भी मेंटेन क्लेम कर सकता है अपने फादर से. एग्जाम्पल, अगर सन पैरालाइज हो गया हो, इस केस में वह अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है. नाउ मेंटेनेंस टू पेरेंट्स. इट इज़ द लाइबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन हिज फादर और मदर इवन इफ दे आर अनेबल टू मेंटेन themselves. Natural father and mother can claim maintenance to their children. Mother include adoptive mother. She can claim maintenance from her adoptive son. Father can also claim maintenance even he failed to fulfill his parental obligation. A childless stepmother also can claim maintenance. Pandurang Bhaurav Davade versus Bhaurav Davade. In this case, Bombay High Court has held that the father or mother can claim maintenance under Section 144, subsection 1, clause D, even if he or she is unable to maintain himself or herself. But it is also important that if parents can claim maintenance to their children, children must have sufficient means to maintain their parents and yet neglect or refuse to maintain father or mother. Now we will move to discuss interim maintenance. Interim maintenance क्या होता है? प्रोसीडिंग में या प्रोसीडिंग के दौरान की गई हेल्प को इंटीरियम मेंटेनेंस कहते हैं, चाहे वो फूड की हो, शेल्टर की हो या अदर को हम इंटीरियम मेंटेनेंस कहते हैं. अ पार्टी क्लेमिंग मेंटेनेंस में ऑल्सो file can application for the interim maintenance during the pendency of proceeding. If magistrate think fit that the party must be allowed with interim maintenance,
then it shall give order to party for monthly allowance for the interim maintenance. The application for the interim maintenance shall be disposed within 60 days from date of service of notice of the application to such a person. The interim maintenance shall be payable from the date of order, or if magistrate order, be payable from date of application. Next, non-compliance of maintenance order. If the person to whom an order for maintenance is issued fail to give maintenance, then the court may issue a warrant against such person for the imprisonment of 1 month. The provision for punishing a person does not waive off liability of a person to maintain. It is a method to compel and levy the amount of maintenance from such a person. Now, procedure for maintenance under Section 145 of BNSS. The procedure for maintenance may be taken against any person where such a person reside, where he or his wife reside, where he last reside with his wife or with mother of legitimate child. If a person try to avoid appearing in court, then the court may hear the case ex parte. Ex parte is a Latin term which means from one party. It means hearing where only one party is permitted to attend and make submission. If the person show good cause for not appearing in court, it can be set aside within 3 months from date of ex parte order. The next is alternation in maintenance allowances. Section 146 of BNSS. If circumstances of parties change, then amount from maintenance cannot be same. It's need to get altered. The change that has taken place shall be proved in court, and magistrate on such proof can alter the amount. Magistrate may increase or decrease amount. It depends upon circumstances of parties. Example: if a wife was not having any job or she was unable to maintain herself and she got order of allowances under section 144, but after some months she is well settled and she has mean to maintain herself, in this case court can order to remove or cancel allowances. Next example: earlier wife was receiving a monthly allowance of 15,000, but now their child who live with wife need to be admitted to a school for study. In such case or situation, the amount of maintenance need to be altered. Now, according to section 146 of subsection 3, where an order has been made in favor of women under section 144, the magistrate can cancel the order in following cases: if woman remarried after divorce, if a woman has taken allowances under any personal law after divorce, and third is if a woman has voluntarily leave her right to maintenance. इन केसेस में वुमेन और वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती. नाउ इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस. सेक्शन 147 डील दिस. The following are conditions for enforcement of order of maintenance. First, copy of order under section 144 is given to that person free of cost in whose favor of children, then copy of order will be given to guardian of children. If any magistrate has made an order under section 144, then any magistrate of India can enforce this order where that person live
who have to give maintenance. Third, the magistrate has to satisfy two conditions before enforcement of order. First, identity of parties. Second, proof of non-payment of allowances. Last conclusion. Chapter 10 of BNSS, essential for protection of right of divorced wife, children, aged parents. It is made to protect them from unusual livelihood. तो ये सेक्शन हेल्प करता है उन लोगों की जो अनेबल हैं टू मेंटेन हर सेल्फ हिमसेल्फ। थैंक यू। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।